Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Farhan Ali Jamali and welcome to another episode of From the Top Inspiring Conversation. आज जो मेरे गेस्ट मेरे साथ हैं Samrah Adnan. Samrah is the head of talent and OD at Khadi. Samrah is a very seasoned HR and OD professional. It's such an honor to have you, Samrah, with me, and I was very much excited and looking forward to this episode. Me too. Thank you so much for inviting. Zabardast. So if I can recall my first interaction with you, that was back in 2012 when I contacted you for inviting you as a guest speaker for a conference in Hyderabad. And to be honest, since then I've been following you, I've been looking at your profile, and alhamdulillah, the way your career progressed, it's an inspiration for me and many others. So I would love to know more about your career. So ज़रा मुझे बताएं कि ये जो आपका career background है, how did it start and how did you become the head of talent and OD at Khadi? Yeah, so thank you so much for inviting. And we go really like back long ago, and then we used to meet at TRG. I remember interactions वहाँ पे होती रहती थी. We both have come a long way, and really I'm very happy for you too, Farhan. So talking about my career, I started in HR by accident. I had no idea what HR is, and I had done just an internship in a company, and over there the CEO was Romana Khoker, and now she works with Engage HR, and she was the CEO. So she saw my work, and she offered me a job role as HR officer, and I was not fully convinced that I should enter HR, because prior to that I had worked in finance department as short stint, and then I was also programming. I was interested in computer science a lot. But then when she offered me the job role of HR officer, it was a really big thing, because I was studying at that time, and internship करने के फ़ौरन बाद, complete होने के फ़ौरन बाद वो job role offer हो गया था, and all my friends were like, you know, you need to take up this job role because it doesn't happen to everyone कि आपके पढ़ाई के दौरान ही अच्छी एक offer आ जाए. Although I was not interested in HR, but then I had a heart-to-heart conversation with her where I explained to her that I am not sure if I'll be able to do this job role, or I am interested, or if I should be doing something that I am not interested in. But she convinced me that I can see the germs of HR in you, the assignments that you have done, they are really good. And then she somehow convinced me, coached me, and I think it was the right decision. I agreed to her and I joined that organization, and from that point onwards I've never looked back. Like, alhamdulillah, the career progressed very far, very fast. I mean, from HR officer to assistant HR manager, then HR manager. Then I made a decision that I need to specialize in one of the areas, because उससे पहले तक एक मैं जर्नलिस्ट की तरह काम कर रही थी, पेरोल भी कर रही होती थी, रिक्रूटमेंट भी कर रहे होते थे, पॉलिसीज़ पे भी काम कर रहे होते थे. So whatever was coming your way, you were doing it. But then I realized that HR is a big field, and in order to become a senior person, professional in HR, I need to specialize in one of the areas, either rewards or talent or OD, and I chose OD. And at that time OD की किसी को इतनी समझ भी नहीं होती थी. Even I learned a lot about OD by studying, reading articles, watching videos, कि ये है क्या, and then I understood that what it is, because in your master's program you एक surface level आपको बता रहे होते हैं कि ये चीज़ है, but जब तक आप वो करते नहीं हैं आपको सही तरह से आइडिया नहीं होता. एंड उसका ईजिएस्ट मुझे रास्ता ही लगा कि मैं लर्निंग के अंदर घुस जाऊँ. तो जैसे ही मैं लर्निंग करना शुरू होंगी तो ओडी उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक के बाद एक कंपोनेंट उसका ऐड करती जाऊंगी, और आई न्यू माई सेल्फ दैट आई विल टेक दोज इनिशिएटिव्स, एंड देन ओडी में किसी तरह आई जाएंगे. तो आई टुक अप दिस अपॉर्चुनिटी इन वन ऑफ द, कैन आई टेक नेम्स ऑफ द कंपनीज? सो आई जॉइंड मैरियट इंटरनेशनल. उनका जो लर्निंग का सेटअप था, इट वॉज फैबुलस. इट वॉज अ ग्लोबल सेटअप, and they supported all of their franchises because they wanted to maintain the same service level everywhere. So यहाँ पे it is part of Hashu group, but they maintained that service level, और उनका इस वजह से जो ट्रेनिंग का सेटअप था वो वर्ल्ड क्लास था.
When I saw their materials, I was a little skeptical, as all of us are before joining any of such industries, जैसे मीडिया हो गया या होटल इंडस्ट्री हो गई, या आप इस तरह के थोड़ा सा एक होता है माइंड में कि शुड आई बी डूइंग इट, आगे करियर में किस तरह प्रोग्रेस करेगा, लिमिट तो नहीं हो जाएगा. बट व्हेन आई सॉ देयर पोर्टल, their resources, their library, and the way they train, it was far ahead of the industry. So I joined that company, and that was the right decision, because right after that, in 1 year's time, Unilever picked me because they were on a lookout for a capability developer, a learning professional. And एक साल में मेरे इतनी learning मैरियट में अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी कि मैं वो उसको यूज़ करके यूनिलीवर के अंदर आई टुक अप दिस अपॉर्चुनिटी, बिकेम कैपेबिलिटी डेवलपर ओवर देयर. उधर उन्होंने मुझे जो पहला असाइनमेंट था, आई हैड टू डिज़ाइन अ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर देयर बेस्ट परफॉर्मर्स. सो वर्कड ऑन दैट, इट वेंट वेल. उसके बाद आई बिकेम द कैपेबिलिटी मैनेजर. Next step ये था that they sent me for an international stint. I went to Myanmar, established their learning academy. There were a couple of other assignments too. Then I moved to Thailand for 6 months. There was a project on OD, so that was my first, like, not first because learning is also a part of OD, but in-depth understanding of OD जो develop हुई तो वहीं पे I worked with really nice professionals over there. Drew Fernandez, who is, I believe, the head of HR for Coca-Cola International. I worked with him directly. He was in Unilever at that time. Learned a lot from him. Learned a lot from Mark McDonald's, who was the global head of learning for Unilever. 6 months baad, I came back, worked for Unilever again, Unilever Pakistan for 1 more year, and then switched to Khadi as learning and OD head. And it's been 7 years that I am in Khadi in different capacities, working on different assignments and enjoying my tenure. Wow, amazing. समरा, इस पूरी जर्नी में आई एम श्योर कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही होंगी जो कि डेफिनेटली आपके करियर का हिस्सा हैं. हाउ वाज दैट इंटरनेशनल असाइनमेंट, लाइक वर्किंग फॉर अ वर्किंग वुमन लाइक यू, टेकिंग अप एन इंटरनेशनल असाइनमेंट? हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? इवन बिफोर गोइंग देयर, एनी चैलेंजेस कि जी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल थे, बिकॉज आई वॉज मैरिड एट दैट टाइम एंड वी वर लिविंग separate from the family, so it was only me and my husband. So obviously he was dependent on me for many things. And we did not have kids उस वक्त, तो वो एक था कि मैं जा सकती थी, बिकॉज किड्स के बाद तो एक another layer ऐड हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की. बट एट अ पर्सनल लेवल इट वॉज चैलेंजिंग, बट इट वॉज अ ड्रीम come true too, because I always wanted to go abroad, study. But then somehow, because of certain reasons, I couldn't go abroad and study. So this was my dream come true, but at a personal level it was a huge challenge, and I convinced my husband somehow. He's alhamdulillah very very supportive, but it was also difficult for him to absorb because अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है. एंड फिर सिर्फ हम दोनों ही थे तो वो एक और ज़्यादा मुश्किल था, बट somehow I convinced him and I went abroad. Professional level के ऊपर it was amazing because I was exposed to a lot of expats from all over the world who were coming over there for their assignments, because Unilever is a global organization. हर वक्त even पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं से कोई एक्सपोजर आपको ज़रूर मिलता था इंटरनेशनल, पाकिस्तान में रहते हुए भी. Even once I remember there was Paul Man who came to Pakistan, who was the global, I think he was the chairman of Unilever globally. So he came down and we met him and had wonderful interaction with him, learnt a lot. Similarly, a lot of other people, like we got this opportunity to meet them. So it was an amazing opportunity, a whole new world. I realized where Pakistan is. मुझे ऐसा लगता था कि टाइम जोन है, पाकिस्तान एक सर्टेन टाइम जोन में है, म्यांमार उससे थोड़ा पीछे है और किसी और टाइम जोन में चल रहा है, एंड थाईलैंड जो है वो थोड़ा आगे है, एंड जो हमारा हेड क्वार्टर्स हैं वो तो बिल्कुल ही किसी और लेवल पर है. सो लर्नड अ लॉट. एक जो थोड़ा सा चैलेंज था उधर जाके, वो एक कल्चरल शॉक का था कि their way of working, Thai people, Burmese people,
वो बहुत डिफरेंट था। एंड जब भी आप किसी जॉब रोल के अंदर होते हैं, आपको सर्टेन चीज़ें सिर्फ खुद नहीं करनी होती, वो डिपेंडेंट होती हैं और लोगों के ऊपर। तो हाउ टू गेट डन फ्रॉम अदर्स, पाकिस्तान में भी नो कि हमें कैसे कराना है। जब आप बाहर जाते हैं देन यू रियलाइज़ कि वो तो बिल्कुल एक अलग सिनारियो है, पर्सनैलिटीज़ अलग हैं, वेज ऑफ वर्किंग अलग हैं। तो आई हैड टू लर्न एंड आई रिमेंबर एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट वे आई वेंट टू द कल्चरल अवेयरनेस ऑफिसर एंड आई आस्क्ड हर कि यहाँ पे तो जो भी मेरे चैलेंजेस थे कि यहाँ इस तरह से हो रहा है, एंड आई एम लाइक आई टुक आउट माई फ्रस्ट्रेशन एंड देन आई लुक्ड एट हर एंड she herself was offended कि okay you are you like kind of getting this challenge from Thai people and coming and talking to me, so that was interesting and then I was like okay पता नहीं मैंने क्या इनको कह दिया, but then I learned कि अगर कोई ऑस्ट्रेलियन बंदा है तो उसके अपना एक तरीका होगा, अगर कोई यूरोपियन है तो उसका एक अलग स्टाइल होता है, अमेरिकन्स आर डिफरेंट, सो इट वाज अमेजिंग लर्निंग। वाओ अमेजिंग। एंड समरा, इन योर करियर कोई ऐसा प्रोजेक्ट दैट यू थिंक इज़ लाइक दी वन ऑफ योर मोस्ट फेवरेट और दैट यू ऑलवेज रिमेंबर, और जब भी याद आता है यू फील वेरी सेटिस्फाइड? So it is a very difficult question because whatever I do, जो चीज़ें अच्छी होती हैं वो तभी अच्छी होती हैं जब मेरा हार्ट एंड सोल उसके अंदर होता है। एंड आई एम अ वेरी पैशनेट पर्सन, आई एम वेरी लाइक सॉर्ट ऑफ परफेक्शनिस्ट। जब कोई सर पे चीज़ सवार होती है तो मैं इवन सोते में भी वही सोच रही होती हूँ। तो इस तरह के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो जैसे बहुत जान मारी है। एंड आई थिंक इफ़ आई हैव टू मेंशन वन, आई थिंक जब खादी ज्वाइन किया था उस वक्त वी रोल्ड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर न्यू फॉर खादी, दैट वर fundamental to Khadi's growth and Khadi's progress towards where we wanted to take it to। तो उसमें एक था कि हमें वैल्यूज़ रोल आउट करने थे खादी के, वो बन गए थे। वी हैड कंसल्टेंट एंड उसकी पूरी एक बहुत ही इन डेप्थ एक्सरसाइज थी, उसमें हमने लोगों को भी इन्वॉल्व किया था, लीडरशिप को भी इन्वॉल्व किया था, एंड वी केम अप विद द वैल्यूज़, खादी वैल्यूज़। एंड वो कोई रेगुलर नहीं है, लाइक जो आपको जनरली सुनने में मिलती हैं उस तरह की वैल्यूज़ नहीं है, बहुत ही यूनिक टू खादी हैं। तो उनको जब हमने रोल आउट करना था तो हमने यही देखना था कि हमने रोल आउट इस तरह से करना है कि हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो और उनको समझ में भी आए और इंगेज्ड हो। तो हमने पूरे साल का एक प्रोग्राम बनाया था और उसमें हमने हर थोड़े दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद एक रोल आउट करते थे। उसके ऊपर उनको एक प्रोजेक्ट देते थे या उनको एक टास्क देते थे, इंगेज करते थे सारे लोगों को। और उस पर वो सक्सेस क्यों है, वो सक्सेस इसलिए है कि जब वो चीज़ कंप्लीट हुई तो हर बंदे को जो उस वक्त हमारे कंपनी में मौजूद था उसको वो चीज़ें याद हो गई थी। इट बिकेम पार्ट ऑफ देयर DNA। अगर हम कोई काम कर रहे होते थे, कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते थे तो हम वो चीज़ याद दिलाते थे कि थिंक क्रिटिकली। फॉर एग्जांपल, आपने क्या ये चीज़ की है, क्या आपने क्रिटिकली इसको इन डेप्थ सोचा है, क्या आपने ये स्टेप्स करे हैं। सो इट बिकेम पार्ट ऑफ आवर एवरीडे वर्क। सो जब मैं वो ऑब्ज़र्व करती थी तो मुझे काफ़ी अभी भी अच्छा लगता है। अभी वो इवॉल्व हो गई हैं मज़ीद, अब उसको हमने इम्प्रूव भी करना है। वी आर ऑन द नेक्स्ट स्टेज नाउ। तो हर टाइम का एक अपनी नीड होती है, उस वक्त की वो नीड था। अब इट्स टाइम दैट वी वेरी सून वी आर गोइंग टू री-शेप देम। सो लुकिंग बैक एट इट, एंड जो लोगों की इंगेजमेंट थी, खादी के लोग भी दे आर वेरी एनर्जेटिक, वेरी क्रिएटिव एंड दे रियली लाइक। अच्छी बात यह कि जब आप कोई चीज़ रोल आउट करते हो तो पार्टिसिपेशन उस तरह की होती है। तो जब मैं देखती हूँ कि एवरी डे काम के अंदर वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है तो बहुत खुशी होती है कि इट्स लाइक मेहनत जो है वो जो रिज़ल्ट है वो आ रहा है। Amazing. And Samrah, coming back to Khadi, I know okay, it's been 7 years, and even in our earlier discussion, one of the things that I found out about Khadi is like Pakistani roots. So, what keeps you going with Khadi? For it's been 7 years. It's people. Khadi is people. Khadi is a culture जो बनता है वो खादी के लोगों से बनता है, किसी भी जगह पे उसके लोगों से बनता है। तो खादी इज़ लाइक अ होम टू मी नाउ। एंड अगर कभी छोड़ के जाना पड़ा तो बहुत ही लाइक आई डोंट नो हाउ दैट ट्रांजिशन इज़ गोइंग टू बी, नॉट दैट इट्स ऑन द कार्ड्स और समथिंग, बट आई थिंक जो चीज़ मुझे खादी के साथ लेके रखा हुआ है, जिसने मुझे रोका हुआ है, वो एक खादी की
मुस्तकिल कोशिश है बेहतर से बेहतरीन की तरफ कि व्हाट वी कैन डू बेटर, अब क्या मज़ीद कर सकते हैं, अब इससे नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है इन एवरी एरिया, बी इट HR, बी इट इन हमारा कल्चर, बी इट कस्टमर एक्सपीरियंस, बी इट प्रोडक्ट, बी इट क्वालिटी, बी इट आर रिटेल स्टोर्स, whatever it is like what nobody is thinking about, we would be doing something and thinking something about it. So that, and then creativity. Khadi is a very, very creative organization. So everyone who is working in their own domains, they try to be creative. It is a very vibrant organization. It is a very फैमिली लाइक ऑर्गेनाइजेशन. ये कहना ज़रा मुश्किल होता है हर जगह के ऊपर क्योंकि हर कंपनी कहती है कि वी आर लाइक अ फैमिली एंड ऑल, बट खादी receives you with an open arm and they make you part of themselves. So every day we would know कि किसी के साथ क्या चल रहा है, किसी की क्या पर्सनालिटी है, हंसी मजाक में सारे काम हो रहे होते हैं, मैसेज भी अक्रॉस हो जाता है. अगर आपको, हमारा एक्चुअली ये कल्चर है सार्किज्म का और मजाक का, तो इन दैट सार्किज्म एंड इन दोज जोक्स we also communicate. So it's a very interesting way of communication. जो बाहर से अगर कोई आता है तो they are a little confused, what's happening, are they serious, और ये serious बात हो रही है या ये मजाक में बात हो रही है. But we have our own way of like having fun and work, and I think I love this thing about that. Wow, amazing. Samrah, where do you spend your most of the time besides your work? For example, और कौन से areas हैं? I see your Instagram post about well-being as well, so I got a feel that you are into that meditation and yoga as well. How's that experience? It's a huge part of my life because being part of the corporate world, where the corporate world is not very easy place to be in, it's cutthroat. All the time you have to be on top of your game, you have to deliver certain assignments, there is pressure, there are teams that you are responsible for their progress, their learning, so there is a lot of pressure. So very early in my career जैसे ये pressure और stress आना शुरू हुआ था, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि I need something to manage it. And उसके लिए I started doing yoga, and now a lot of time, every day at least 1 hour goes into my fitness regime. So be it yoga, be it strength training. These days I'm into strength training, and yoga is for warm up and for in the end. So थोड़ा सा yoga back burner पे चला गया है, लेकिन जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, meditation is something that keeps me level-headed and calms me down. So it's a big part of my time every day. Then उसके अलावा I take out time for my kid who is 3 years old and who is looking forward to कि मम्मा कब आएंगी, बाबा कब आएंगे, and कब मैं उनके साथ time spend करूँगा. So I try कि मैं उसके साथ activities करूँ. So I find something कि he really likes dinosaurs, तो and he also likes कि जो फॉसिल्स होते हैं वो कैसे निकलते हैं, तो आई कीप लुकिंग फॉर दोज टॉयज़ जहाँ पे फॉसिल रिलेटेड कुछ हो या बोन्स हो या कुछ भी डायनासोर रिलेटेड हो. और इट्स पेंटिंग, उसको पेंटिंग का ज़्यादा शौक नहीं है, सो वो 5 मिनट करके भाग जाता है. सो वॉट एवर ही लाइक्स, सो वी प्ले टुगेदर. उसके अलावा ओवर द वीकेंड्स आई ट्राई दैट आई कीप ऑन लर्निंग समथिंग न्यू, something very different from my own field. So these days I'm learning financial analysis and investments. How do you do it? How do you become a financial analyst? So it's something not that I want to be I want to do something in finance. It's just that it's something very different. So it's like it kind of helps me with my appetite to learn new things. So these days my focus is there. Then there are my creative needs. So I stitch, I paint. कोई बहुत अच्छा पेंट नहीं करती, कभी मुझसे पेंटिंग नहीं मांगना कि मुझे कुछ दिखा दें अपना काम. So I do that. I try to make patterns. I try to act like a fashion designer, make my patterns, stitch them, wear them. So far मैंने सिर्फ अपने लिए ही किया है, but it's like it just calms me down when I am कोई भी इन चीज़ों में से कोई काम मैं कर रही होती हूँ, and it's very different from my
career from my work, so it helps me कि जो है वो दिमाग कहीं और लग जाता है, and it calms you down, it brings you back to your creativity, and you just feel satisfied, fulfilled. So that's my like. Amazing. कोई मैं ज़्यादा सोशलाइज नहीं करती, कोई मैं पार्टीज़ पे नहीं जाती, शादियों में भी कोई जहाँ से बहुत ज़्यादा सिर्फ ये डर होता है कि डांट पड़ जाएगी तो वहाँ सिर्फ चली जाती हूँ, बाकी मेरा ये रूटीन है. Wow, amazing. Samrah, coming back to this wellness part, and mashallah, by just hearing your story about giving time to this wellness, एक चीज़ मुझे बताएं, retail sector is all about like result oriented. So you know the importance of wellness as well, and you also know the importance of OD as well because that's what you do. So इस result oriented organizational culture में या even business setup में दूसरी तरफ आप वेलनेस को और ओडी को भी साथ अपने लेकर चलें. हाउ डिफ़िकल्ट और हाउ इजी इज़ दैट? So it's not about difficulty or ease, it's about that what you believe as an organization or as a leader. So अगर एक कंपनी डिसाइड कर लेती है कि we have to focus on people's well-being, तो वो उसी तरह का कल्चर भी बनाएंगे और उस तरह की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे. एंड वेल-बीइंग इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर फीमेल्स, इट्स फॉर एवरीवन. सो अगर आपने उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी है, देन आप उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटीज़ बिल्ड करते हैं और लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस देते हैं. पहले तो आपको उनको पता ही नहीं होता कि हाउ टू मैनेज देयर वेल-बीइंग. फिर उसके बाद अगर आप कहेंगे कि ओके यू हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट योर वेल-बीइंग, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको अच्छा खाना खाना चाहिए या लाइक हेल्दी खाना खाना चाहिए, बट आप उनको टाइम नहीं दे रहे हैं टू फोकस ऑन दीज थिंग्स, या आपके पॉलिसीज़ के अंदर, प्रोसीजर्स के अंदर, कल्चर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटीज़ नहीं है, देन यू आर कॉन्ट्रोडिक्टिंग टू व्हाट यू आर सेइंग. सो एक चीज़ कहने की होती है, करने की होती है. अगर दिस इज़ ऑल अबाउट दैट व्हाट अ कंपनी वांट्स टू डू, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट. इट मेक्स अ परफेक्ट बिजनेस केस बिकॉज हेल्दी पीपल आर प्रोडक्टिव टीम मेंबर्स. सो जो कंपनीज इसको समझती हैं वो उसके बारे में करती हैं, एफर्ट भी करती हैं, इम्प्लीमेंट भी करती हैं. सो आई थिंक अब आजकल के ज़माने में तो सबको अंदाज़ा हो गया है, एंड स्पेशली फॉर फीमेल्स, इफ़ यू वांट देम टू बी पार्ट ऑफ योर वर्क फोर्स, आपको वो उनके लिए वो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी. आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई बच्चा भी बीमार होता है, स्कूल ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, और हमारी सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो ख़वातीन ने ही ली हुई होती हैं. तो आपको वो चीज़ें फिर डे केयर हो गया या मैटरनिटी लीव एक्सटेंडेड, एक तो है कि लीगली आपको 4 months देना है, लेकिन क्या आपकी कंपनी एक्सटेंड करती है, क्या सपोर्ट करती है, या आप वापस अगर कोई रीजॉइन करना चाह रहा है तो उसको आप किस तरीके से फैसिलिटेट करते हैं. तो ये वाली प्रैक्टिसेस आई थिंक कि अगर कोई कंपनी ज़रूरी समझती है तो वो ज़रूर इसको अप्लाई करे. Perfect. Thank you so much, Samrah. One more thing I just wanted to ask you about DI. So if you look back at these concepts like diversity, inclusion, equity back in like 15 years back when you join the career or workplace, और आप जब अभी उसको compare करती हैं, how do you see कि क्या कुछ इम्पैक्ट आया है? जी बिल्कुल आया है, एंड आई थिंक कि अब तो अवार्ड्स भी हैं काफ़ी सारे और काफ़ी सारी कंपनीज उसमें पार्टिसिपेट करती हैं. इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ के अवार्ड मिल जाए, एक्चुअली उनके इनिशिएटिव्स होते हैं काफ़ी अच्छे. मैं कंपनीज का आई डोंट नो नाम लेना चाहिए नहीं, बट एक जो आई थिंक जैज़ का था, टेलीनॉर का था, दैट दे वांटेड द फीमेल वर्कर्स टू जॉइन बैक द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आफ्टर अ ब्रेक. उसमें उन्होंने सपोर्ट किया था. प्लस डिफरेंट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के जो इनिशिएटिव्स हैं उसके ऊपर आपको पता चलता रहता है कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है. सो वी हैव कम अ लॉन्ग वे. जब मैंने स्टार्ट किया था, यू विल नॉट बिलीव दैट माई मैनेजिंग डायरेक्टर ही टोल्ड मी कि मैं लड़कियों को रखता हूँ बिकॉज वो बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत दिल से करती हैं, मेहनत बहुत करती हैं, लेकिन जब उनकी शादी होती है तो मैं फिर उनको नहीं कंटिन्यू करने देता, क्योंकि फिर उनको फोकस करना चाहिए अपने घर पर, और वो नहीं कर सकती, फिर वो जॉब सही तरह नहीं कर सकती. और मैं बहुत हैरान हुई थी कि अच्छा इट्स लाइक व्हाट विल आई डू बिकॉज आई वाज एंगेज्ड एट दैट टाइम. But then he told me that you are going to be the first girl who will continue working for me even after your marriage.
So I was like, okay, amazing, but it was like, but then somehow I had to leave that job, and जब मेरी शादी हुई तो 6 महीने का ब्रेक मैंने लिया, या लेना पड़ा. वापस आने के लिए जब मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं तो देयर इवन अगर आप प्रोग्रेस पूछ रहे हैं तो इवन द क्वेश्चंस इन द इंटरव्यूज़ वर रिडिकुलस कि अब क्या होगा, अब आपकी शादी हो गई है तो आप तो छोड़ देंगी, आप तो हो सकता है 1 साल बाद आपका बेबी हो जाए फिर आप छोड़ देंगी. एंड आई वाज लाइक कि दिस इज़ इट्स लाइक मैं काम करना चाहती हूँ, मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि आई विल कीप ऑन वर्किंग, आई एम वेरी फोकस्ड ऑन माई करियर. तो इवन सवाल भी इस तरह होते थे ना. आई हैड सच अ डिफ़िकल्ट टाइम टू रीजॉइन द corporate world because of these things. I had given hundreds of interviews and nobody was willing to take me despite of my experience. And क्योंकि मैं बगैर experience के भी नहीं आ रही थी, I wasn't even fresh. I had some experience, good academics, but still. And then when I rejoined, फिर मैंने कहा कि यार गैप नहीं लेना है. यहाँ बड़ा मसला हो जाता है. लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा चेंज देख रही हूँ. इट्स अ गुड साइन एंड इट्स अस हू हैव टू मेक द चेंज. एंड इवन कुछ कंपनीज ब्रेक के बाद जैसे इनिशिएटिव्स भी उन्होंने लॉन्च किए हैं कि अगर आपने गैप किया है उसके बाद उनके बहुत लिए एक्सेप्टेंस आ गई है, अवेयरनेस आ गई है. सिर्फ इस एरिया को लेकर नहीं और एरियाज़ के ऊपर भी. पहले तो डे केयर का ही नहीं होता था. अब ये फैसिलिटी या तो प्रेमिसेस के ऊपर होती है या वो आपको फैसिलिटेट करते हैं कि आप ड्रॉप करके आ जाएं कहीं पर और वहाँ पे एक अच्छा आपको पैकेज दिलवा देते हैं डे केयर का, बिकॉज इट्स लाइक रियली इम्पॉर्टेंट. सो Samrah, one more thing I wanted to ask you. Post COVID जो हमारा बिजनेस का और जो वर्क प्लेस का सिनारियो डेवलप हुआ है आफ्टर लाइक फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और जो बाकी चीज़ें हुई हैं उसमें हाउ डू यू लुक एट द रोल ऑफ लीडरशिप? इवन आई वुड लाइक टू एड द जनरेशनल गैप एज वेल. लाइक जो अब जो यंग जनरेशन आई है उसको रिटेन करने के लिए, उसको इंगेज करने के लिए व्हाट डू यू थिंक आइडियल लीडरशिप जो है उसका क्या रोल होना चाहिए? सो लीडरशिप हैज़ टू बी वेरी वेरी प्रोग्रेसिव दीज डेज. अब आपने सुना होगा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ AI की, जो अब हर एक के पास एक चैट बॉट है. एंड कुछ जो अभी मैंने थोड़े दिन पहले अपने CEO को उसके ऊपर एक, क्योंकि हम डिज़ाइंस बनाते हैं, हम पैटर्न्स बनाते हैं, हम टेक्सटाइल डिज़ाइन बनाते हैं, तो उसके ऊपर मैंने कुछ टेक्सटाइल डिज़ाइन जनरेट करके उनको भेजे थे. मैंने कहा देखें ये इट्स वी हैव सच अ बिग स्टूडियो. एंड नॉट दैट कि वो उनको रिप्लेस कर सकता है, बिकॉज क्रिएटिविटी जो ह्यूमन इंटरेक्शन से या इंटरवीन करने से आती है वो उस तरह AI को आते आते बहुत टाइम लगेगा, बट स्टिल यू नो तो हम वहाँ पर पहुँच गए. तो with all of all of this progress in technology and everything, I think leadership needs to understand कि अब जो लोग workforce में आ रहे हैं they are digitally native. उन्होंने adopt नहीं किया है, वो उनका it's part of their life. तो how to make it part of their everyday work, how to make it commonplace that you have that you're working remotely. These flexibilities, I think there is no question about it. It's like, और अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, people will prefer other companies. जो आपका smart talent है, they will prefer those companies who are very pro about these things. So it's not choice. You don't have a choice. Leadership doesn't have a choice. Leadership actually they have to foresee कि अब क्या आ रहा है and how do we adapt to those changes. And so that's the part that leadership has to play. But challenge बिल्कुल है. कोविड के बाद से जो एक जनरेशनल गैप है, चैलेंज वहाँ पे बिल्कुल है कि वो इतना ज़्यादा they want human interaction like physically, they want people to be there always and उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है. बट ये चेंज तो अब आ चुका है. So true. Samrah, if I take you back to like when you started your career, so now if you reflect and if I ask you कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको 15-20 साल पहले करनी चाहिए थी for your career that you didn't do, अगर मैं आपको पीछे ले जाऊँ तो वो क्या करना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें. So I think कि I used to really focus on just work. इस तरह लगा लिया एंड बस अपने काम पे फोकस कर लिया, अपना काम बस अच्छा हो जाए. सो नॉट लुकिंग अराउंड के लोग हैं
उनसे बातचीत, रिलेशनशिप बिल्डिंग, इट्स रियली इम्पोर्टेंट, नेटवर्किंग. सो आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. आई वॉज वेरी इन टू माई ओन वर्क, माई ओन स्पेस. हाँ, उस काम को करने के लिए अगर किसी से बात करनी है तो मैं बिल्कुल करूँगी, बहुत अच्छे से करूँगी. या नेचुरली किसी से दोस्ती हो गई है तो वो बहुत अच्छे से होगा. ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही आइसोलेशन हो. बट मैं एक एफ़र्ट नहीं करती थी लोगों को जानने की या लोगों से मिलने की, कि वो क्या करते हैं, बिज़नेस को अंडरस्टैंड करने की, कि और जो दूसरे पार्ट्स हैं बिज़नेस के उसमें क्या हो रहा है. तो इफ़ आई गो बैक, आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट आई विल फोकस ऑन. सेकेंड, आई विल बी focused on, I will be very honest here, you, wherever you go, whatever you say, you build a perception. आपका एक इमेज बिल्ड होता है और वो कभी सही बिल्ड होता है और कभी वो गलत बिल्ड होता है. एंड एक मेरे लाइन मैनेजर थे, उन्होंने जब मुझे एक फीडबैक दी कि तुम्हारे बारे में ये परसेप्शन बिल्ड हो गया, एंड आई वाज लाइक कि लेकिन आपको तो पता है कि ये सही नहीं है, ऐसा तो नहीं है, आई एम नॉट लाइक दैट. एंड उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात की कि समरा, परसेप्शन इज़ रियलिटी. सो अगर ये परसेप्शन है तो ये लोगों की रियलिटी है एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट. सो इफ़ आई गो बैक, आई विल, एक तो काम तो है, काम आपने करना है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करे बगैर. बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं कुछ और करूँगी तो मैं अपना जो काम हलाल कर रही हूँ, अपना टाइम जो पूरा लगा रही हूँ, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी. ऐसा नहीं है. You have to manage your perception, image as well. You have to build your interpersonal skills. You have to talk to people because that also opens a lot of opportunities for you. You also give back to people. There are few things that people will learn from you. Then there are a lot of things that you will learn from other people. So that is something that I didn't do. Now I do it and I learned it on the way, and credit goes to a lot of leaders, a lot of line managers who woke me up, Samrah. और भी चीज़ें हैं like you. So I think this is something that I've learned, and I always like tell people, just मुझे थोड़ा सा ही लगता है कि वो इस तरह के. Now I make a point, and now I've started enjoying it. Like I come to my floor and I will talk to this person, I'll talk to that person. Sometimes they're working and I'm like, मैं बीच में उनको तंग कर रही होती हूँ या फोकस नहीं करने देती हूँ. बहुत सारे विक्टिम्स होते हैं मेरे जो है उसके, बिकॉज आई थिंक काफ़ी डिस्ट्रैक्शन में लेकर आ जाती हूँ. बिकॉज अगर मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ तो मैं बाकी भी क्यों कर रहे हैं. सो नाउ इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग. And Samrah, now coming back to the lifelong lessons, because in 15 साल में I'm sure कि life has taught you so many things. तो ऐसे कौन से lessons हैं leadership के या ज़िंदगी को गुजारने के that you hold very close to yourself? I think so the number one lesson for me, I was very particular about my career, बहुत ज़्यादा hard working, बहुत serious उसको लेती थी, ज़िंदगी मौत का मसला, इवन पढ़ाई को लेती थी. And I think this is the lifelong lesson is that don't take yourself and your journey too seriously. Enjoy every day. Whatever you do, do it to the level of perfection every day. सिर्फ लेकिन एक चीज़ को टारगेट नहीं करना. जो जो आपकी पूरे दिन में आपकी ज़िंदगी का पार्ट है, be it your family, be it your work, be it your hobbies, just give your 100%, enjoy it, and don't do anything if you don't enjoy it. If you're not having fun, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा उसके ना आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि बस this thing will take me to the next position, so just for the sake of it, don't do it. I think this is my mantra these days. Another lesson is that everything is connected. You are connected to every person who is around you, everything that is happening. नेगेटिविटी से दूर भागती हूँ मैं. इफ़ देर इज़ समबडी हु इज़ लाइक, कुछ लोगों की ज़रा आदत होती है एक वेंट करना, एक दूसरी बात होती है. बिकॉज यू नो एवरी डे में कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है एंड वी लाइक फील कंफर्टेबल टू शेयर, तो वो वेंट करना एक अलग बात होती है. बट अगर कोई बंदा कॉन्स्टेंटली नेगेटिव है, उसके साथ कितना अच्छा हो जाए लेकिन उसने बोलना नेगेटिव है, आई जस्ट रन अवे. Don't let negativity come to you. Don't listen to it. Don't see it. Just stay positive. Positive things happen then.
एंड इफ़ यू नो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो जाती है. अदरवाइज अगर आप कुछ नेगेटिव सोचें तो वो आपको लगता है कि चीज़ें उसी तरीके से होती हैं. आई स्ट्रांगली बिलीव इन दीज थिंग्स. एंड these days, like after 20 years of experience, I think that the biggest lesson तो नहीं कहूँगी इसको, मैं ये कहूँगी कि what I want to do is I want to give back. So whoever is entering the workforce, in my team, in other teams, I adopt my like I become their sponsors. If I spot a talent, so my job is to spot talent now and to help them grow, especially being in HR. So I become their sponsors and I give them those platforms. कि मैं कोई बहुत ज़्यादा वो महान साउंड करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ. आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट दैट कि मैं कर चुकी हूँ. मैं जब मेरी टीम में कोई ज्वाइन करता तो मैं कहती हूँ मैं ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये प्रोजेक्ट भी कर लिया है, मैंने बहुत इंजॉय भी कर लिया है स्पॉटलाइट. नाउ यू डू इट, आई एम ऑल्सो टायर्ड ऑफ इट, बट आई लाइक जेन्युइनली रूट फॉर देयर सक्सेस. So and when they achieve something, it really gives me like satisfaction. Amazing. I really like that. Last question before we go to the rapid fire round. And for example, if someone like in their mid 20s, they are joining the workforce, अभी young हैं, अभी पूरा career पड़ा है, उन लोगों के लिए आप क्या advice देंगी कि उनको किस चीज़ पे focus करना चाहिए? सो आई थिंक ये तो उनको बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए कि हमें कुछ आता है, राइट. सो लर्न एज मच एज यू वॉन्ट टू. यू हैव द एनर्जी, यू डोंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अगर आपको किसी चीज़ का पैशन है, शौक़ है, आप वो इन्जॉय कर रहे हैं, आप उस पर पूरी अपनी एनर्जी लगा दें. आप 10 ईयर्स अगर लगा देंगे, आपकी पूरी आगे की लाइफ जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस करेगी. इंशाल्लाह करियर खुद ब खुद प्रोग्रेस करेगा अगर आपने वो चीज़ें लर्न कर ली और उसमें एक कैपेबिलिटी अपनी जो है वो बिल्ड कर ली. सो जस्ट डेडिकेट दैट टाइम. ऑल्सो आई थिंक कि जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में है वैसे वो हमसे ज़्यादा अवेयर हैं और वो बहुत ज़्यादा उनका जो माइंडसेट है वो है कि हमने अपना काम करना है, बजाय इसके कि वी हैव टू जॉइन सम मल्टीनेशनल. हमारे टाइम पे होता था कि बस मल्टीनेशनल में मिल जाए, तो वो हमसे ज़्यादा अवेयर हैं. बट स्टिल आई थिंक कि अगर किसी को ये चीज़ उन्होंने कभी सोची नहीं है तो दे नीड टू थिंक अबाउट इट कि दे आर अदर एवेन्यूज़ टू. किसी बड़ी कंपनी में ज़रूरी नहीं है कि आप काम कर लें. आप किसी अच्छी कंपनी में जहाँ का कल्चर अच्छा हो, जहाँ के लीडर्स अच्छे हों, जो सिखाना चाह रहे हो, आप ये देख के एक तो ज्वाइन करें कंपनी. और ऑल्सो थिंक अबाउट कि आप क्या कर सकते हैं. ऑल्सो टेल, बिकॉज आपके अभी कोई स्टेक्स नहीं है, अभी आपके कोई रिस्क एज सच नहीं है, आपकी कोई इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है कि घर चलाना है एंड यू हैव टू ब्रिंग अ सर्टेन अमाउंट होम. So that is the time to take risk, that is the time to explore opportunities. and जब आपको वो चीज़ मिल गई जिस पे आपने अपना एफर्ट लगाना है, पैशन आपको है उसका, तो उस पर फिर अपना 100% बस लगा दें. आपके दैट्स द बेस्ट टाइम, क्योंकि उसके बाद आने वाली ज़िंदगी में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ बढ़ेंगी. So profound, I must say. Amazing. So Samrah, now we are into the rapid fire round, and the round 1 is this or that. I know कि situational और context हर चीज़ का होता है, but you have to pick only one. I will assume certain things. Yeah. ठीक है. So the number 1 question, open door policy or scheduled one-on-one meetings? Open door. Okay, good. Elon Musk or Bill Gates? Elon Musk. Okay. Job security or career growth opportunities? Career growth. Okay. Vision or execution? Vision. Okay. Data driven or intuition based decision making? So that's a difficult. Intuition. Okay, good. In-house OD interventions or external ones? In-house. Okay. मेरी जॉब ही. मैं अपनी जॉब भी सिक्योर करना चाह रहा था. Okay, so money or passion? Passion. Okay. Individual bonuses or team bonuses? Individual. Okay. And resilience or adaptability? Adaptability. Okay, a few more. Diversity and inclusion training programs or diversity and inclusion quota? Training program. Okay. Results or process? Process. Formal documentation or informal discussions? Informal discussions. Okay. Collaborative workspace or private offices? Collaborative work.
Okay, now we have like fill the sentence round. You have to fill the sentence, right? So number one question is, the best way to improve workplace culture is? To practice what you preach. Good. The biggest challenge facing leaders today is? The uncertainty. Okay, good. The best advice you ever received was? To believe the feedback that you receive about yourself. Don't put a blind eye to it. There is like, if not more, maybe 20% truth to it. Great. To create a healthy culture, it is important to? Again, practice what you preach. Okay, a few more. The most underrated skill in OD is? Underrated. Yeah. We can skip this question as well. So one more thing. One trend in leadership that you think will gain popularity in future. One what? One trend in leadership that you think will gain popularity in the next 5 years. I think leaders nowadays, if I see, they are like more like being part of the whole team and reducing the gaps between them and the team. Okay, good. Now a few more. One thing you wish you had known before starting your career. That I am good in other things too. I didn't know, what my, honestly, I didn't know that I have other skills. Okay, good. I believe the key to achieving work-life balance is? I actually want to say something Please. about it. Please. I think parents need to notice that a kid, because आप बहुत naive होते हैं उस age के अंदर. I started working when I was 20 years old. Right. So मुझे जो मिल गया वो मैंने कर लिया. And जैसे मैंने बताया जिस तरह मैं HR में आई हूँ. Yeah. So I think कि अगर parents देखें और वो realize करें कि बेटा आप इस चीज़ में अच्छे हो, तो that would be great. I think आजकल वैसे parents में ये चीज़ है. Get it. So last one. I believe the key to achieve work-life balance is? Have your priorities set. Okay, and finally 2 situation-based questions, where this round is called what would you? ठीक है जी? So the situation is, okay, your company is considering a major reorganization, which will involve layoffs and reassignments of employees. What would you do to ensure the process is handled in a more compassionate and empathetic way? Communicate. Be transparent, tell everyone. And actually this is something that I have experienced, that once you share the problem, people understand and they like become part of the process. It goes smoothly. True. One more. One of your team members is consistently underperforming and has been given several warnings. But in my team or my peer? This is one of your team members. Okay, my team. Yeah. So is consistently underperforming and has been given several warnings but has not shown any improvement. What would you do to address the situation? Acha, in my team, nobody underperforms. Okay. Ever. So I find some way to engage them to pick that thing ke wo, jo na, passionately they start working. Okay, Samrah, and the last question is, you have been hired to lead a team of employees who have been working together for years and are resistant to change. What would you do? I will become part of them. I'll be like, मुझे भी change नहीं चाहिए. फिर जब उनको trust हो जाएगा कि ये she is part of us, then I will like slowly and gradually, start the change. Amazing. A lovely performance in rapid fire round, I must say. Amazing. So Samrah, thank you so much for being with us. It was such a pleasure having you. बहुत insightful discussion. And I must tell you कि वो जो हमारी theme है ना, inspiring conversation, ये वही है, inspiring conversation. I assure you. I hope so कि edit होके भी अच्छी लगे आपको. I am very hopeful कि जो listeners हैं, after watching this video, they will find something very useful for them as well. Thank you so much. Negative comments नहीं आने चाहिए.
चले ठीक है, thank Thank you thank so you much. so much.